Hello students, welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. और आज 28 जून 22 के शिफ्ट 2 पेपर की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलो अजय, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव NN बॉन्ड, that is N2O, N2O4, N2O3, N2O5, that is nitrogen oxides are given. And in this you can see in N2O, this is the structure of N2O. In between nitrogens there is a bond, and in N2O4 there is an N bond, and in N2O3 also there is an N bond, and in N2O5 there is no NN bond. Okay. So, among the given 4, 3 are having NN bonds and except N2O5. So, answer is 3. Next question, very simple question. Isotopes of hydrogen have different. What are the isotopes of hydrogen? That is H11, H12, H13, protium, deuterium and tritium. इसमें number of protons is same, number of electrons is same, and the difference is in the neutrons. So, answer is neutrons. Third question, how many of the following compounds have sulfur atoms in 2 different oxidation states? Here the given compounds are H2S2O3 and H2S2O8, H2S2O7, H2S2O5. And if you see these structures H2S2O3, इसमें ये वाले सल्फर के लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये वाले सल्फर के लिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसमें ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन। सो इस बॉन्ड की वजह से यहाँ -1 ऑक्सीडेशन नंबर और इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और ये डबल बॉन्ड की वजह से सल्फर के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। क्यों? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा, तो फिर इसके ऊपर +2 चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर -2। अब ये ऑक्सीजन की तरफ से भी सेम +1, यहाँ -1, और ये हाइड्रोजन की तरफ से ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो यहाँ भी -1, यहाँ +1, और यहाँ ये बॉन्ड की तरफ से भी ये -1, ये +1। सो ओवरऑल ऑक्सीजन के लिए -2 आ गया, यहाँ भी -2 आ गया, यहाँ भी -2 है। अब ये दोनों सल्फर्स में बच्चों, ये सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, because there is 2 lone pairs and 1 bonded atom, steric number 3. So, it is sp2 hybridized, it is sp3 hybridized, and in these two, sp2 hybridized is more electronegative than sp3 hybridized. So, electronegativity is more for sp2 than sp3. That is why these bond pair electrons are attracted towards this sulfur. So, it will acquire -2 and this sulfur will get +2. Now, the overall oxidation state for this sulfur is +6 and for this sulfur it is -2. So, in this compound, sulfur is having 2 different oxidation states. And in this way, if you observe H2S2O8, here this sulfur will get +6 oxidation state and this sulfur also will get +6 oxidation state. And in H2S2O7 also the same, this sulfur gets +6 and this sulfur gets +6. And in H2S2O5, you can observe here this sulfur will get +5 because of these bonds, and this sulfur will get +3 oxidation state because of these bonds. So, these two compounds only are having different oxidation states of sulfur. So, the answer is 2. Which compounds are having different oxidation states? H2S2O3
and H2S2O5. Now, another question, this is related to chemical bonding. Identify the correct statement regarding SF4. First one, it has one lone pair at equatorial position with two lone pair bond pair repulsions at 90 degrees. And SF4, if you calculate the steric number, SF4 is having one lone pair and 4 bond pairs and it is having सीसा shape और इसमें ये इक्वेटोरियल पोजीशन में लोन पेयर है और bonded atoms are these two are at 90 degrees angle. Now the lone pair and bond pair repulsions you can observe at 90 degrees angle. This bond pair and this lone pair will get repulsions at 90 degrees angle. Okay, and lone pair is at equatorial position. So this option is correct among the given options. And the given options, if you can see, it has one lone pair at axial position with two lone pairs bond pair repulsions at 90 degrees, and it has one lone pair at equatorial position with three lone pair bond pair repulsions at 90 degrees, and it has one lone pair at axial position with three lone pair bond pair repulsions at 90 degrees. Among these, only first option is correct. Next, this is a question from periodic table, the acidic and basic strength of oxides, and you know non-metal oxides are acidic, metal oxides are basic, and alumina oxide is amphoteric and metalloid oxides are also in amphoteric. Among the given, silicon oxide and SO2, these two are non-metal oxides, so acidic, and calcium oxide is basic oxide because calcium is the metal and alumina is amphoteric oxide. So the answer is basic oxide पूछा है तो आंसर क्या होगा? Second one. Next one related to coordination compounds. Which set of complex ions represent paramagnetic character? बच्चों ये क्वेश्चन, इस तरह की क्वेश्चंस हर पेपर में हर दिन अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं हर पेपर में तो ये मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ये क्वेश्चन तो आया है। और इसमें आप देख सकते हैं FeCN6 3 माइनस, FeCN6 4 माइनस, TiCN6 3 माइनस, COCN6 3 minus, NiCN6 4 minus, all are octahedral complexes. और इसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करें। FeCN6 3 minus में iron is in +3 state, it has 3d5 configuration, and due to the strong field ligand, due to the presence of strong field ligand in T2G and EG orbitals, in T2G and EG orbitals, the electrons are distributed as, in presence of strong field, first T2G is filled and after that only the EG. So here you will get T2G 2-2-1 configuration, EG 0-0. So the number of unpaired electrons in the first complex is number of unpaired electrons 1. Now in the second complex, iron is in +2 state, that is 3d6 configuration, and Cn minus ligands that are strong field ligands. So the 6 electron pairs, the 6 electrons are paired up in T2G orbitals and the number of unpaired electrons are 0, that is diamagnetic. Now in the titanium complex, here also titanium is in +3 state, it has 3d1. So D1, D2, D3, whatever may be the ligand present, it always shows sp3, D2, D2 sp3 hybridization, और इसमें ये कन्पेड इलेक्ट्रॉन तो है तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट COCN6 3 माइनस, इसमें कोबाल्ट इज इन +3 स्टेट, it is also having 3d6 configuration, and Cn minus strong field ligands. So just like the second complex, it is also having T2G 2-2-2 configuration and it also has 0 unpaired electrons. Now the
Fifth one, nickel hexacyanide complex. In this, nickel is in +2 state and 3d8 configuration. So, if you fill the 8 electrons, first T2g orbitals are filled and next EZ orbitals. 6 are filled here and the next 2 electrons are filled 1 in the EZ orbitals. So, there is 2 unpaired electrons you can observe, and in the nickel complex you will get 2 unpaired electrons. Okay. Now, once again if you see this question, which set of complex ions represent paramagnetic character? So, जिसमें unpaired electrons है वो complexes paramagnetic होगा. So, first complex, third complex and the fifth complex are paramagnetic. Okay. First complex, third complex and fifth complex are paramagnetic. So, the answer is 2. Next one, this question related to metallurgy. बहुत easy सवाल दिया है इसमें. Ferrous oxide silica gives ferrosilicate. इसमें ferrous oxide और silica ferrosilicate के बारे में इस तरह पूछा है, in which ferrous oxide and ferrosilicate acts as. इसमें यदि ferrous oxide is gangue, that means impurity, then silica is added as the flux and we will get ferrosilicate, that is formed as the slag. Because in the extraction of copper, it is mentioned already, in the extraction of copper, ferrous oxide is gangue and silica is added to remove this gangue. Next one, this is the question from ionic equilibrium and well known question. pH of a buffer solution, acidic buffer solution is given and इसमें ratio of acetate and acetic acid पूछा है और Ka वैल्यू भी दिया है. तो pH कैलकुलेट करने के लिए acidic buffer solution के लिए फार्मूला pH equal to pKa plus log acetate concentration upon acetic acid concentration. इसमें आपको pH ऑलरेडी दे रखा है 4 और pKa वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे because Ka is provided, Ka equal to 10 power minus 5 and pKa value equal to minus log 10 power minus 5, then you will get 5. So, substituting the pKa value 5 and log acetate concentration by acetic acid concentration. यहाँ हमको ये रेशियो चाहिए acetate and acetic acid की रेशियो, concentrations की रेशियो. This will be 1 by 10 and it will be equal to 0.1. Now, how many of the following show cis-trans isomerism? इसमें 4 कॉम्प्लेक्सेस दिया है, वेर्नर्स कॉम्प्लेक्सेस. इसमें कौन सा cis-trans isomerism शो करेगा? ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में पहले वाले आप ऑब्जर्व कर लो, COCl3 4NH3, ये 4 B2 टाइप में है, ये कॉम्प्लेक्स, ये M4 B2 टाइप में, ये 5 B टाइप में है, ये 6 टाइप में है और ये 3 B3 टाइप में है. इसमें cis-trans सिर्फ यही शो कर सकता है और ये वाले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम बताएंगे, फैक एंड मेर आइसोमेरिज्म, एंड इट इज नॉट cis-trans आइसोमेरिज्म, इट इज ओनली cis-trans आइसोमेरिज्म इट कैन शो. एंड ये दोनों cis-trans आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और इसको भी हम cis-trans आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते हैं, वो फैक एंड मेर आइसोमेरिज्म है. नेक्स्ट वन, ये compound contain 8.64 mass percent of hydrogen, 74 mass percent of carbon and 17.36 mass percent of nitrogen and have molecular mass 162, then possible compound is. ये इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दे रखा है, सो गिवन ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर मास 162 के बराबर है. ठीक है, आप इसमें चेक करेंगे तो इसकी मॉलिक्यूलर मास आ जाएगी 162.
और अदरवाइज मास परसेंटेजेस दिया है, ये मास परसेंटेजेस को हम 8.64%, 74% कार्बन के 74% दिया है और हाइड्रोजन के लिए 8.64% दिया है एंड नाइट्रोजन के लिए 17.36% दिया है और इनको एटॉमिक मासेस से डिवाइड करेंगे। कार्बन के एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन की 1, इसकी 14। जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आएगा उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। वो सिंपलेस्ट रेशियो 10, 14 एंड 2, इसमें सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी आपको 7, 5, 7, 1, ये सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगी। इसकी मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये सिंपलेस्ट रेशियो से, उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और उनसे फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। ये सारे करने के लिए बोर्ड लेवल के लिए तो अच्छा है, लेकिन अपन को इसमें 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सिंपल ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास यदि आपको नहीं दिया तो तब ये सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन अपन को मॉलिक्यूलर मास दिया है तो डायरेक्टली आप इसमें कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो C10H14N2 का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे तो 162 आ जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, this is the question from atomic structure and the statements are given. We have to select the correct statements. First one, N can have values 1, 2, 3, 4. Yes, it can have 1, 2, 3, 4, so on. And number of orbitals for a given value of L is 2L plus 1. Yes, this is also the correct statement. For a given L value, number of orbitals can be 2L plus 1. And third statement, value of spin quantum numbers is always plus or minus half. Yes, it is also correct. And the fourth statement, for L equal to 5, total number of orbitals is 9. If you calculate by using 2L plus 1, 2 into 5 plus 1, it will be equal to 11. That means number of orbitals should be 11 but not 9. So, the first three statements only correct. This is the question from electrochemistry, the well known question. इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिया है और इसमें Sn+4 से Sn+2 की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ये SRP वैल्यू इज द intensive property, so we cannot add directly. So, we are taking delta G, which is an extensive property, gives free energy chain. So, for this first reaction Sn2 plus 2 Sn, E0 value is provided, that is minus 0.14, and delta G0 value is also provided, that is minus delta G0 we are calculating by using delta G0 equal to minus NF E0. So, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तब डेल्टा G1 नॉट आएगा और सेकेंड इक्वेशन का भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर रहे हैं और टोटल ओवरऑल इक्वेशन हम लिखेंगे तो ये E3 नॉट आएगा। E3 नॉट के वैल्यू तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन डेल्टा G3 नॉट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ माइनस NF E3 नॉट, यहाँ इसमें N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फैराडेज कांस्टेंट, E3 नॉट वी हैव टू कैलकुलेट। और अपने टारगेट इक्वेशन है ये इक्वेशन, इसमें हमको E3 नॉट कैलकुलेट करना है। ये इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग द वैल्यू एज E3 नॉट इक्वल टू 0.44 वोल्ट्स। अब इसको सम x इंटू 10⁻⁻² के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि हमको x वैल्यू पूछा तो ये x वैल्यू कितना हो जाएगी, 44 हो जाएगी। इसमें हम E3 नॉट कैलकुलेट किया है, ये 0.44 वोल्ट्स आएगा, इसको 44 इंटू 10⁻² वोल्ट्स में लिखेंगे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। इसमें चार्जेस के रिलेटेड क्वेश्चंस है, पॉजिटिव कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, नेगेटिव कोलाइड, जेल, इसको मैच करना है। इसमें चार्जेस हम ऑब्जर्व करें, पॉजिटिव कोलाइड इज
Fe2O3 XH2O. Hydrated metal oxides are having positive charge, and sulfides of metals will have negative charge, and इसमें cadmium sulfide can be the negative colloid, and macromolecular colloid is the starch, and gel is the cheese. Now, this is the question from solution colligative properties. इसमें आप देख सकते हैं 2.5 grams of protein dissolved in 500 grams of water at 300 Kelvin. The observed value of osmotic pressure is 0.41 atm. The number of glycine units present in protein is. इसमें बच्चों osmotic pressure की फार्मूला pi equal to CRT और C means concentration, molarity हम कैलकुलेट कर रहे हैं. Pi value osmotic pressure is provided, that is 0.41, and concentration we are calculating, that is weight of solute into 1000 by molecular weight into volume of solution into R value 0.082, temperature 300 Kelvin. Now, if you substitute here, this is 0.410 and we are calculating molecular weight, then we will get molecular weight as 300 gram per mole. This is the molecular weight of protein. अब इसमें कितने ग्लाइसिन यूनिट्स होगा ये कैलकुलेट करना है. सो द ग्लाइसिन यूनिट्स दैट इज CH2NH2COOH एमिनो एसिड, इसमें इनका मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 75 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा. अब नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स पर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मोलर मास में इसको डिवाइड करेंगे तो 4 ग्लाइसिन यूनिट्स आएगा. दैट मीन्स द प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 ग्लाइसिन यूनिट्स. ये एमिनो एसिड का मोलर मास है ग्लाइसिन एमिनो एसिड की. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.45 grams of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen on complete combustion gave 0.735 grams of CO2 and 0.45 grams of water. Then mass percentage of oxygen पूछा है. इसमें ये given compound के combustion reaction है. अब इसमें ऑक्सीजन को हम एक्सेस में ले रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सेस में ले रहे हैं. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मास दिया है, वाटर के भी मास दिया है. अब वेट ऑफ कार्बन हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वेट ऑफ कार्बन कैलकुलेट किया तो ये 0.2 ग्राम्स आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम्स कार्बन होगा और इसमें 0.735 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं. 0.735 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा ये कैलकुलेट किया तो ये 0.2 ग्राम्स आ जाएगा. और सिमिलरली वेट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर रहे हैं. इसमें ये वाटर के लिए मोलर मास 18 ग्राम्स में 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है. अब 0.45 ग्राम्स में कितना हाइड्रोजन होगा ये कैलकुलेट कर रहे हैं. यू आर गेटिंग 0.05 ग्राम्स. अब टोटल वेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैलकुलेट किया, ये 0.25 आ गया. अब इसमें ऑक्सीजन भी है ये कंपाउंड में, तो वेट ऑफ कार्बन वेट ऑफ हाइड्रोजन पता चल गया. ऑक्सीजन की वेट चाहिए तो इनकी वेट में ये कार्बन हाइड्रोजन वेट सब्ट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजन की वेट आ जाएगी. तो इसमें हम वेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.20 ग्राम्स आ जाएगी. अब हमको मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, कंपाउंड के अंदर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. अब इसमें 0.2 बाय 0.45 इंटू 100 बिकॉज इट इज 0.2 बाय 0.45. क्यों? ये 0.2 ग्राम्स मास ऑफ ऑक्सीजन है और टोटल वेट इसका 0.45 है. सो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 44.44% आएगा. अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 44 के बराबर ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.2 grams of an ideal gas at 300 Kelvin temperature and 1 bar pressure occupying 0.082 liters and
calculate the molar mass of the gas. It is from gaseous state, very easy question. We can substitute in the ideal gas equation PV equal to nRT, or pressure is given, volume is given, and we have to calculate molecular weight because इसमें weight is provided. Now, molecular weight if you calculate, you will get 60 gram per mole. Okay students, that is it for this session, and we will meet in the next session. Thank you.